हेलो फ्रेंड्स, हम हमारी आज के सेशन में देखने वाले हैं डेटा साइंस में फोरकास्टिंग केस स्टडी के बारे में। आखिर फोरकास्टिंग केस स्टडी होता है। अब देखो, फोरकास्टिंग स्टडी हम यूज करते हैं हमारे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए कैसे कि देखो, आपके क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, उसको फ्यूचर में उसकी कितनी डिमांड होगी, उसकी कितनी सेलिंग होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, हमें उसकी इन फ्यूचर उसका कितना स्टॉक रिक्वायर्ड पड़ेगा इन एडवांस में। इसी ये जो हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग चीजें है, इसका स्टडी करने के लिए हम फॉरकास्टिंग के स्टडी कंसेप्ट का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। फॉरकास्टिंग स्टडी में क्या करते हैं, हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज करते हैं। जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा है उसका यूज करके हम क्या करते हैं, मशीन लर्निंग की मदद से वेरियस टाइप के मॉडल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब हमारे मॉडल्स तो क्रिएट हो गए, वो जैसे कि उसमें हम यूज करते हैं मॉडल्स में अल्गोरिदम, जैसे कि लिनियर रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन, डीप लर्निंग, ऐसे क्या करते हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब जो हमारा फोरकास्टिंग स्टडी है, हम इसका यूज करते हैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे वर्क होता है। फोरकास्टिंग स्टडी में देखो, अब यहाँ पे जो भी हमारा क्या है, एक केमिकल कंपनी का हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि उसका फोरकास्टिंग स्टडी हम कैसे करेंगे। यूजिंग कटिंग एज मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड a wide array of forecasting techniques, subchains deliver a forecasting model that help companies and international chemical manufacturing to reduce their forecast error by 20% compared to the benchmark. Those results were achieved despite the lack of historical data and absence of demand arrivals. जैसे कि इसमें क्या दिया गया, हमने एक केमिकल की कंपनी है, उसका हमें क्या करना है, हिस्टोरिकल डेटा का यूज करे हमें उसकी केस स्टडी यहाँ पे फॉरकास्टिंग करना है। तो देखो सिचुएशन क्या है, बिजनेस सिचुएशन उसकी देखते हैं। enjoying a dominating position of chemical and oil industry, our client compounds X manufacture and disrupt a wide area of chemical agents, produce products, parts and exploration tools to their manufacturers. In 2021, Campion X reported a total revenue of $3 billion, doing business in over 60 countries with 7,000 employees. अब देखो यहाँ पे क्या है कि उसने हमें कंपनी के बारे में बताया कि एक केमिकल की प्लस एक ऑयल की कंपनी है, जिसमें कि हमारे क्लाइंट है कैंपियन एक्स, जो मैन्युफैक्चर करते हैं हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स को, पार्ट्स को, और उसको क्या करते हैं, उसको डिप्लॉय करने का काम करते हैं। तो 2021 में यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी उसका रेन्यू था, रिपोर्ट मिली थी हमें, अकॉर्डिंग टू द टोटल रेन्यू उसकी थी $3 billion। और वो जो कंपनी है हमारी, वो 60+ कंट्रीज में क्या करती है, उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है, और उसके साथ उसके पास 7,000 एम्प्लॉयज प्लस काम कर रही है। Currently review their inventory and forecasting practice. They have socialized our idea to increase their forecasting accuracy while offering insight on optimal aggregation. Level of forecasting demand, supply chains also help by training 25 planners worldwide on a best practice for demand planning and inventory planning using two business simulation game. अब यहाँ पे क्या किया है कि ये जो करंट उसका रिन्यू क्या है, रिव्यू लिया उसने, तो उसने क्या कि उसका जो भी है 25 प्लानर्स को उसने वर्ल्ड वाइड क्या दिए, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए। अब उसमें कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस हुए थे उसमें, फोरकास्ट चैलेंजेस, forecasting hierarchies. To support its supply chain decision, Campion X need to enjoy accurate forecast at two different aggregation levels. यहाँ पे दो डिफरेंट वे में क्या किया था उन्होंने, एक्यूरेसी फाइंड की थी। एग्रीगेट रीजन इनटू केमिकल एजेंट, और सेकंड वन था सब रीजन इनटू प्रोडक्ट्स। यूजिंग स्पेसिफिक granularity level to generate a forecasting influence the accuracy of the various other level. The end goal is create a accurate forecasting by region X chemical agent by sub-region X product. So the challenge for supply chain was finding which currently level was the most interesting. लिमिटेड हिस्टोरिकल डेटा, पहले यहाँ पे हमारे पास जो भी था उसमें हमें जो भी डेटा था वो था लिमिटेड, यानी
The client ERP system only allows the conversation of historical sales up to 3 years. हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल था वो 3 years था. Years यानी 36 month का ही हमारे पास अवेलेबल था. हमें बेस्ट एक्यूरेसी चाहिए तो हमें मोर डेटा हमारे मशीन को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है. वी ग्रेटली इंकरेज अप्लाई चेन practice to keep as much historical data as possible and store in accuracy as shown in previous case studies. Our client market is heavy industry. Campaign X being among the first link of complex global supply chain, deal, dealing in bulk volumes and greatly sensitive to the bluff effect. This behavior lead to attract demand patterns that are especially difficult to interrupt for the forecasting models. Demand drivers. Due to the nature of chemicals and oil industry, we wouldn't leverage usually demand drivers such as pricing, marketing, or promotion to provide extra insight to our models. In addition, the identified demands derive that influence the market are microeconomic and unforecastable. We cannot use them for forecasting future demand. Moreover, due to the BOM complexity, we could not access historical inventory levels that could be provide extra insight regarding storage shortage. In summary, the data set and forecasting setup is especially challenging for three main reasons. इसमें तीन reasons हमारे पास challenging थे. First one is supply chain solution. So this forecasting challenge was one of the hard to have had faced. इसमें क्या थी, ये challenge हमें face करने के लिए बहुत hard था. To give ourselves the most challenge of success, chance of success, we have tried to both statistical based and machine learning based models, optimize each best extent and compare their accuracy on the bias of select best solution. मैं देखो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए हमें दो वेज से इसको मॉडल्स को ट्रेन किया था. एक था स्टैटिस्टिकल बेस, सेकंड था मशीन लर्निंग बेस. इसमें जो भी एक्यूरेसी हमें मिलेगी उसको हम क्या करने वाले थे, बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले थे. Forecasting matrix. The dataset being iterative, we have chosen a simple combination of median absolute error. यहाँ पे हमने यमी को यूज किया था और सेकंड वन से सिंपल फोरकास्ट एरर इन द फिगर and bias to access the forecasting quality of our forecast. The combination has the advantages of being simple to interpret while looking at accuracy and bias. More information about forecasting matrix. Data cleaning. Data cleaning ये बहुत ज़्यादा हमारे पास हमारा थर्ड चैलेंज था. Product transition. We identify product transition throughout our insensitive data cleaning exercise. As a historical ultra stated in the first below, we new product replace another one. Our model can look at the historical sales of from advantages of forecasting new one. Models and technology. We develop हमने यहाँ पे दो मॉडल्स को यहाँ पे क्या किया था, डेवलप किया था. फर्स्ट वन इज मशीन लर्निंग. The first one is a tree-based machine learning model based on introduced in a data science for supply chain forecasting. The model leverages the latest technologies such as CPU multi-threading and GPU computation capabilities to generate a forecast in 5 minutes using modern laptops. यहाँ हमें रिजल्ट क्या मिले थे? The alternate here under our machine learning model deliver an amazing 20% forecast added value compared to the benchmark or 6-month moving average. This is a more than twice an added value of state of the statistical forecasting engine. We compute added value as a percent reduction of scoring matrix combining MAE and bias. More information about forecast value added here. For more information, see how do we select our benchmark and how do you test our models at the end of the document. Forecasting case study में हमारे जो रिजल्ट मिल रहे थे वो देखो. I shown in the above below figure, our machine learning model deliver accurate forecast over the 6 month. The spread between the model and the benchmark even whilst our time our model only lose around 1% accuracy per month, where the benchmark lost about 2%.
फोकसिंग केस स्टडी में हमने केस स्टडी में दो अप्रोचेस को फॉलो किया था, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच. Our machine learning model deliver a great added value for both generalities. Still, we want to use a undefined forecast, one number forecast for both generalities. In other words, the aggregated forecast region and chemical agent should reconcile with the detailed forecast sub-region and product. To select the best model between the aggregated and one detailed model, we ran a second batch of tests on both aggregation level using top-down approach and bottom-up technique as highlighted in the below figure. Moreover, we added a third combined forecast by averaging the forecast to the initial two models. We use 6-month rolling horizon forecast starting with the only 24 months of history of generate our second batch of tests. For our machine learning model, such as the low amount and historical data, is similar to the fight with one hand attached to your back. Nevertheless, it is also successfully deliver 20% added value compared to the benchmark. यहाँ पे देखो जो भी हमारा है उसका क्या है, यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, यहाँ पे फोरकास्टिंग एरर है, यहाँ पे हमारा है बायस. Forecasting study as a detail level, the combined forecast display on FVA of 21% means 1.1% short of bottom-up forecast. As a display in the two figures above, the top-down forecast made at detail level provides slightly more accurate prediction than bottom-up and combined forecast. Think, nevertheless, we decide to use combined model as a final model. Indeed, we use good results to that think that is the combination of provide better or more insight result over time than a single model top down or bottom up level. देखिए यहाँ पे हमने दो अप्रोच यूज किए थे, टॉप डाउन और बॉटम अप. अब वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती, उसी दैट से हमने क्या किया कि दोनों मॉडल का एक कंबाइन थर्ड अप्रोच क्रिएट किया. Project timeline. There are 3 weeks of work we need to gather the correct pricing and producting instructions, transitions, and construct a clean data set that will be fed into the various models. 2 more weeks we spent creating the models and testing features and ideas. A final week was decided to analyze the models, perform, and making final reports.